Hello everyone and welcome back to my channel The Coding View. In previous video we have discussed about the SDLC and its types. So what is SDLC? SDLC stands for Software Development Lifecycle. So it is a step-by-step procedure to develop a new software. Okay. So what are the types of SDLC? We have seen that first one is the waterfall model, then spiral model, V&V model, hybrid model, agile methodology and all the things. Okay. So in previous video we have seen about the waterfall model. So after waterfall model, in today's topic we are going to see about the spiral model. Okay, so what is spiral model? Spiral, why we call it as spiral model? Because the structure, the process we follow here, it looks like spiral, it goes like a spiral, so it is, so hence we called it as a spiral model. First of all, I will dictate here and I have notes, so I will also try to make sure you should understand from the notes also. Okay, so why we call it as spiral? Because the structure, the process we follow here, it looks like spiral, it goes like this, is like spiral. Okay, so hence we are calling it as a spiral model. Okay, what happens in spiral model? In spiral model, the software product is developed in small modules. So what happens here is the software product, the whole software product is built in small modules. It is divided into small groups and it is developed in small modules. Okay, small features. So hence it is known as the spiral model. So for better understanding, we will take example of WhatsApp. Okay, so let's understand with the WhatsApp example. What happens in spiral model is we develop, okay, software in small modules. Okay, what happens, we develop software into smaller modules. Okay, we will try to understand. For example, WhatsApp. Okay, WhatsApp, what are the features in software? For example, the first feature is chatting feature. Okay, the next feature is status. We status देख सकते हैं. Okay, status feature. फिर आता है कॉलिंग फीचर, दैट इज व्हाट्सअप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग एटसेट्रा, जो आप रात भर बातें करते हो. ओके, this is, and the fourth one is setting feature, like etc, all the things. Okay, so what happens here is in WhatsApp model, if the WhatsApp wants to build their software in spiral model, what happens here is, first of all we will see the design, okay, of spiral model. This is the requirement collection phase. Okay, फिर आता है डिजाइन. यू शुड नो ऑलरेडी. ओके, व्हाट आर द फेजेस ऑफ एसडीएलसी मॉडल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज. फिर होता है डिजाइनिंग. आफ्टर डिजाइनिंग व्हाट वी डू, द कोडिंग वी परफॉर्म कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ओके, फिर आफ्टर कोडिंग व्हाट वी डू द टेस्टिंग. ओके, वी डू द टेस्टिंग. ओके, let us take WhatsApp example. Okay, समझो we are going to develop the chat feature. Okay, first of all what happens, we divide the software. Okay, WhatsApp के फीचर्स है वो हम small modules, small features में डिवाइड करते हैं. ओके, एंड we release that small modules. व्हाट्सअप जब लॉन्च हुआ था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट कंटेन दैट ऑल द चैट फीचर, स्टेटस फीचर, कॉलिंग फीचर, सेटिंग फीचर, ऑल द थिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, सिर्फ चैट फीचर आया था और सेटिंग फीचर के साथ. बाद में आ गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेटस का फीचर. बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉलिंग का फीचर और वीडियो कॉल फीचर. ओके, दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ स्पाइरल मॉडल. ओके, हम क्या करते हैं, इसको मॉड्यूल ए समझते हैं. ओके, दिस इज द मॉड्यूल ए. स्टेटस का फीचर है मॉड्यूल बी, फिर कॉलिंग का फीचर है मॉड्यूल सी, एंड फिर सेटिंग का फीचर तो ऑलमोस्ट होता है. ओके, सो मॉड्यूल डी लाइक दिस. सो व्हाट हैपन्स फॉर मॉड्यूल ए, रिक्वायरमेंट कलेक्शन हैपन्स. ओके, रिक्वायरमेंट कलेक्शन फॉर मॉड्यूल ए हियर हैपन्स, रिक्वायरमेंट कलेक्शन फॉर मॉड्यूल ए. ओके, ओके, आई विल टेक दिस वन. रिक्वायरमेंट कलेक्शन फॉर मॉड्यूल ए हैपन्स. ओके, देन होता है डिजाइनिंग का पार्ट, डिजाइनिंग ऑफ मॉड्यूल ए. ओके, फिर होता है कोडिंग का पार्ट, कोडिंग ऑफ मॉड्यूल ए. फिर होता है टेस्टिंग का पार्ट, टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल ए. सो आफ्टर गोइंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फ्रॉम देन डिजाइन, देन कोडिंग एंड टेस्टिंग, द मॉड्यूल ए आवर इज रेडी. ओके, फिर क्या होता है, मॉड्यूल रेडी होने के बाद हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, मॉड्यूल बी. ओके, स्टेटस का फीचर. ओके, सो फॉर स्टेटस आल्सो व्हाट हैपन्स, वी गो विथ रिक्वायरमेंट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल बी. ओके, सो दिस इज द RB, रिक्वायरमेंट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल बी फॉर स्टेटस. ओके, बाद में उसका क्या होता है, इट प्रोसेस सेम होता है. ओके, फ्लो इज सेम. सो फिर होता है डिजाइनिंग का पार्ट, फिर वी डिजाइन फॉर
मॉड्यूल बी, फिर होता है कोडिंग का पार्ट, ओके, वी डिजाइन फॉर मॉड्यूल बी, देन आता है कोडिंग का पार्ट, देन वी कोड फॉर मॉड्यूल बी, ओके, कोड फॉर मॉड्यूल बी, फिर आता है टेस्टिंग का पार्ट। व्हाइल डूइंग टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल बी we perform 3 types here, okay, we perform 3 scenarios. First of all, we have developed or we have tested or we have successfully completed the module A, okay, फिर क्या करते हैं हम मॉड्यूल B का यहाँ पे 3 काम करते हैं हम। टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल बी भी होता है फर्स्ट थिंग, यहाँ पे 3 सिनेरियोज होते हैं, ओके। इन टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल बी व्हाट वी डू, first of all we do the testing of module B, okay, if it is functionally stable then what we do the integration testing of module B with the module A, okay। अगर समझो हमने मॉड्यूल बी इंट्रोड्यूस किया है व्हाट्सएप में, अगर वो अफेक्ट कर रहा है मॉड्यूल ए को, इफ वी इंट्रोड्यूस द न्यू मॉडल स्टेटस, ओके, इफ इट इज अफेक्टिंग मॉड्यूल ए देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। हमें प्रोडक्ट फंक्शनली स्टेबल भी होना चाहिए, ओके। सो फॉर दिस रीजन वी डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल बी विथ मॉड्यूल ए। फिर यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो गए, एक हम मॉड्यूल बी का टेस्टिंग करते हैं, module B, if module B is functionally stable then we do integration testing with module A. If the result comes like it is also functionally stable then only we go for the requirement collection of module C, okay। फिर जाते हैं हम requirement collection में module C के, okay। Then we go for the requirement collection of module C, okay। After requirement collection of module C the same process flows, okay। फिर हम डिज़ाइन करते हैं module C का, after designing we do the coding of module C, okay। After coding of module C we do the testing of module C, okay, okay, then we perform the testing of module C। यहाँ पे सिनेरियो क्या क्या बनते हैं, while testing of module C we test for the module C if the calling or for in WhatsApp scenario if the calling or video function is working properly or not, it is functionally stable or not। अगर module C समझो functionally stable है then we do the integration testing with the module B, okay, जो हमने ऑलरेडी रिलीज किया है। इफ इट इज अफेक्टिंग द मॉड्यूल बी द न्यू फीचर्स वी इंट्रोड्यूस्ड is affecting with the already existing features or not, we check this thing only here, okay। सो मॉड्यूल सी के साथ मॉड्यूल बी का हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक करते हैं। इफ इट इज़ फंक्शनली स्टेबल देन आल्सो वी चेक फॉर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल बी और मॉड्यूल ए। फिर हम द थिंग हैपन्स हियर इज हमने मॉड्यूल सी इंट्रोड्यूस किया है। मॉड्यूल सी इंट्रोड्यूस करने के बाद इफ़ देयर आर चेंजेस, इफ समथिंग हैपन्स इन द इंटीग्रेशन बिटवीन ए एंड बी, so it is not going to work, okay। sub every feature should be functionally stable then only the product is stable, okay। module C what we do I will write here, okay। for module C, okay, module C हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं मॉड्यूल C का विथ मॉड्यूल B, okay। फिर और इस सिनेरियो क्या बनता है, वी डू द इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल A विथ मॉड्यूल B। जो फीचर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल सी, इट इज़ अफेक्टिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स, दैट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन द ए एंड बी। सो वी चेक ऑल द थिंग्स हियर एंड आफ्टर चेकिंग द मॉड्यूल सी वी चेक हियर द टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल सी, ओके। टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल सी भी होती है। So these things we test here for module C. After testing of module C, we perform the same process. We goes to the requirement collection for module D. Requirement collection होने के बाद फिर then we goes to the coding phase of module D. After designing हो गया, after designing coding, then we go for the testing of module D. What happens in testing of module D? We perform the integration testing between the and one more scenario, okay। in module C we do the integration testing for module C with A, okay। I forgot to tell, sorry। so we perform this also, okay। what happens in the scenario of module C, what we do, testing of module C करते हैं हम, we perform testing of module C, then we do integration testing between the module A and module B, then we perform integration testing between module A and module C, then we perform integration testing between the module B and module C. The main aim to do all the things is the new features we are introducing in the software, it should not affect the life or it should not affect the workflow of the existing features. This is the main aim, okay। For module D also we do the same thing, we test the module D, okay।
after testing of module D, we perform the integration testing between module C and module D. After performing integration testing of module C with module D, we performed integration testing with module D and module B, and module with integration testing again with module A and module D. Okay, this is nothing but the regression testing. This we called it as a regression testing in manual testing. Okay, the new features we introducing in the software product, it should not affect the existing workflow of the existing features. Okay, it should not affect. So this is the main aim. So let us go with the PDF and more understanding. Okay, so what happens here is, इन स्पायरल मॉडल ओके उन्होंने यही समझा है. स्पायरल मॉडल समझो ये रिक्वायरमेंट कलेक्शन ऑफ ए है. ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट कलेक्शन ऑफ ए. फिर वो ए मॉड्यूल है. ओके, यहाँ पे ए मॉड्यूल है. सो रिक्वायरमेंट कलेक्शन ऑफ ए, रिक्वायरमेंट कलेक्शन फेज होने के बाद व्हाट हैपन्स, द डिजाइनिंग फेज ऑफ मॉड्यूल ए. आफ्टर डिजाइनिंग फेज ऑफ मॉड्यूल ए, द कोडिंग फेज ऑफ मॉड्यूल ए हैपन्स हियर. आफ्टर कोडिंग ए, द टेस्टिंग फेज ऑफ मॉड्यूल ए. ओके, आफ्टर टेस्टिंग फेज व्हाट वी डू, वी इंट्रोड्यूस द मॉड्यूल बी हियर. ओके, after introducing the module B, we do the same process. Okay, requirement collection of module B, then designing phase of module B, then coding phase of module B. After coding of module B, what we do the testing of module B. While performing testing of module B, okay, 1 minute. Okay, while performing testing of module B, we do the integration testing between the module A and module B. So after testing of module B, we introduce the module C feature. Okay, after, so the process goes same: requirement collection of module C, then requirement designing of module C, then coding of module C. After coding of module C, what we do the testing of module C. We perform the testing of module C. While performing of testing of module C, what we do, we check the integration testing. We do the integration testing between the module C and module B. The changes we have introduced, the new feature we have introduced in the software, it should not affect the workflow of the existing feature. Okay, so we do the integration testing between the module C and module B, and also we perform the integration testing between module A and module B, and also we do the integration testing between the module A and module C. Okay, so this is then after performing all the things, if we find that the software product is functionally stable, then we go with the new feature, new module D. So for say the process goes the same. We do the requirement collection, then we do the requirement collection for module D, then designing, coding and testing, then we do the integration testing, all the things. Okay, why it is known as spiral? Because it looks like spiral, it goes like spiral, so hence it is known as, it goes on and on and on, so this hence it is known as a spiral, spiral model. Okay, for spiral model, the best example I may say. Okay, what are the advantages of spiral model? This is main thing. Okay, what are the advantages of spiral model? Requirement changes are allowed. So the requirement changes are not allowed in waterfall model, but in spiral model requirement changes are allowed. After we develop one feature module of the product, then only we go to the develop of next module. Okay, whenever the customer requests for major changes in requirement in a particular model, then we change only that module and do testing for both unit and integration testing. What is meant by integration testing? Testing the data flow between the two components is known as the integration testing. And what is unit testing? Unit testing is nothing but testing the particular component or unit. It is known as the unit testing. The change in requirement comes up in a separate cycle. Okay, this is all the things you can read. Okay, or take the screenshot for better understanding. Customer requirement specification, that is CRS, then business analyst goes CRS, then converts that CRS into SRS or BRS. Okay, all the things here, SRS, all the we discussed in the previous videos. Okay, for SDLC and also for waterfall model. I will provide the link in I button, you should check from there. Okay, what are the drawbacks of spiral model? It is a, first of all, it is a traditional model, and thus developers only did the testing job as well. Okay, so there is no concept of test engineer here also. So if developers do the coding job also and developers perform the testing job also, so there is a pressure. Okay, so there is a work pressure on the developer. So what they do, developer ने एक thing build किया. Okay, फिर वो उसको ही testing करने का है, he has to do the testing. So वो अपना काम दोबारा क्यों करेगा ना? Back is the developers only do the testing job also, so that's why the bugs or the
sometimes the bugs flow from the developing phase to the testing phase and all and on. Okay, so what are the applications of spiral model? Whenever there is a dependency, there is a integration or dependency in building the different module of the software, then we use the spiral model. Okay, whenever the customer gives the requirement in stages, make sure that customer gives the requirement in stages, we develop the product in stages, that is known as spiral model. After building of one module, then only we go for the building of another module. Okay, this is the main difference between the spiral model. This is the main difference of spiral model. Okay, so that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel, and also if you have queries, please comment on this. I will try to rectify it. Okay.